श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ षष्ठो अध्याय। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिजन्म कर्म च भूय प्रपच्यत ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुत। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्रेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्यादो ततः किं करोद्भवान् स्वायम्भूकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वय कथं चेदमुदस्त्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्पविषयामेतं स्मृतिं ते सुरसत्तम न हेष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृति। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदृष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्यादेतत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनं सस्वतन्त्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छति इष्यसि एव शे लोको योषादारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले उषीवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकपञ्चहायन एकदा निर्गतां व्येया द्विहन्ति निशिं गाम्पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टकपणां कालचोदित तदा तदमिषस्य भक्तानां शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम् स्फिताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वन्नान्युपवनाननी च चित्रधातुविचित्रादिनिर्भवर्ग्नभुजद्रुमान् जलाशयाच्चीवजलान्नलीसुरसेविता चित्रस्वने पत्रर्वे विभ्रमदभ्रमरश्रिय न लवणे शूरस्तम्बुकशिश्च कगकय्यरम् एक एवातियातोऽहं द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकरं व्यालोलूकशिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तत्पीडितो बुभुक्षित स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम तस्मिन्निमनुजेरण्ये विप्पलोपस्था आत्मानात्मानमत्मस्तं यश्चाश्रुतं मच्चिन्तयम् ध्यायातश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा ओतकण्ठाय शकुलाक्षे हृद्यजसीन्मे शने हरि प्रेमातिभरिनिर्भिन्नपुलकाङ्कोतिनिर्वित आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यं भूयं मुने रूपं भगवतो यत्मन् कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहतोस्तस्ते वैकल्या दुर्मना इव दिदृक्षिस्थितं भूय प्राणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यं वृतित इवातुर एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरक्षणयां वाचा शुच प्रशमयन्निव अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामा दृष्टुमिहार्हति अविकक्षयाणां दुर्दशोऽहं कियोगिनां सकृदि यद्दर्शितं रूपमेतात्कमायते नग मत्कामशनके साधु सर्वान्मुचिन्ति हच्चयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढामति इता त्ववद्यमिमं लोकं गन्तामजान्तमासि मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कहिर्चित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहा एतावत्तुत्परमाम तन्महद्भूतं नभेलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीष्णावनां विददे न कुम्पित नामान्यन्तस्ये हतत्रप पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यन्तस्तुष्टमनागतस्पृहकालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सर् एवं कृष्णमते ब्रह्मन् सत्यामलात्मन कालप्रादुर्भूत्काले तडिसोदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्ययपतत्पाश्च भौतिक कल्पान्त इदमादाय शयनाम्बस्युजन्वत शिशयीशोरनुप्राणा विवेशन्तरः विभो
सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदंसि सश्रित मरीचिमिषा विषये प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्ब्रह्मिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्स्कन्दित्वत अनुग्रहान् महाविष्णो विघातगति कञ्चित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मा विभूषितं मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादा प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्व्यातुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुल्प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथे कामलो बहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वता तद्वदा न शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नग जन्मकर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मशोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनि अहो देवर्षि धन्ययो यत्कीर्तिशाङ्गधन्वन गायन्माद्यन्निदन्तन्त्र्या रमयत्यातुरं जग इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतवान् सदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभु सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रम पश्चिमतटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसनीपो उपस्पृश्य प्रादिनभ्यो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्राणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुनर्थं तत्कर्तं चापि पद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चके सात्वसंहितां यस्यां वैषूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहो भयापहा स संहिता भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिरितं मुनि शौनक उवाच सवे निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपोक्षको मुनि कस्य वा बृहतीमेतामात्मा रामसमभ्यसत् सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनियो निर्गन्तो अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किं वृत्तिमित्यभुक्तगुणो हरि हरे गुणाशिक्ष्मति भगवान् बादरायणी अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिय परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्मकर्म विलापनं संस्थाचं पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयं यदा मृदे कौरवसृज्यानां वीरेशो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्वगदा विमर्श भगदोर्दुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणरीति समपश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रयेमे तस्य जुगुप्सितं कर्म विर्गहयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्राष्पकलाकुलाक्षी तां सा तन्वनाव किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिराततायिन गाण्डीवमुक्तेर्विशिखेरुपाहरे त्वकर्म्य यत्नासी दग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पे सा तन्वयित्वाच्युत पितृसूत अन्वाद्रवध्यंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्रिगमनारथेन पराद्रौ प्राणपरिसुर्व्यां यावद्वग्नं रुद्रभयाद्यकार्थ यदा शरणमात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मज अतोपस्पृश्य सलिलं सन्ददे तत्समाहित अजाननुपसंहारं प्राणकिच्छ उपस्थिते ततः पादुष्कृतं तेज प्रचण्डं सर्वतोषितं प्राणापदभृमेक्ष्य विष्णुं जिष्णुर्वाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानापमुकर्वोऽसि संसृते त्वमाद्यपुरुषे साक्षादीश्वर प्रकृते पर मायां युधस्य चित्तकृत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि
स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतस विधस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहर्षिया स्वानं चानन्यभावनामुद्यानाय चासकृत् किमिदं स्वीकृतोकेति देवदेव न वेद्यम्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजपरदारुणम्। श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते न हय्यातनं तं किञ्चिदस्त्रं प्रात्यवकर्षणं जयस्त्रतेज उन्नद्भं अस्त्रज्ञो हस्त्रतेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनपरवीरः स्पृष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राह्यं ब्राह्माय सन्ददे संहत्यान्योनमुभयोस्तेजसि सरसंवृते आवृत्य रोदसी खंचं वव्रिदाते कर्वहिन्वित दृष्टा तेजस्तु तयोर्लिलोकान् प्रदहन्मत दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकमवंसत प्रजोपल्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयं तत आसद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्ष पशुं रशनयायता शिबिराय निनिशन्तं दाम्ना बद्धा रिपुबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षण मेनं पार्थाहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागससुप्तान् विदिधिन्निशबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्नमत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं वीरतं भीतं न रिपुं न हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् य परप्राणे प्रपुष्यान् ते गृह्णखल तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्योदात्यादमुपमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनीपुत्रः तदसो वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरकृतवान् कुलपांसन एवं परीक्षता धर्मं पार्थकृष्णेन चोदित नेच्छदन्तु गुरुसुतं यद्यपय्यात्महं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथि नव्यदयतं प्रियाय शोचन्त्यात्मजान् हतान् तथा हतं पशुवत पाशबद्धमवाङ्गमुखकर्मजुगपत्सेतेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपयान नाम च उवाच चासहन्तस्य बन्धनाय न सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सर्विसो गर्पसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्मा मनोधर्तं पत्यान्ते नाग्वान्तीर्वसुकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्दि गौरवं कुलं द्विजं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमक्षिलं मामरोदिदस्य जननी गौतमीपतिदेवता यताहमृतवत्सार्ता रोदिम्यशुमुखी मुहुः ये कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यर्जातित्मभि तत्कुलं प्रदहायात्यु सानुबन्धं शुचार्पितं। सूत उवाच धर्म्यं न्याम्यं सकुरं निर्व्यलीकं सम्महत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यन्दद्वचो द्विजा नकुलसह देवश्च युयुधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ययाश्च योषित तत्राहमर्षितो भीमसत्य श्रेयान् वदस्मृत न भर्तुनात्मचार्ते सोहन सुप्तान् शिशून् वृता निशम्य भीमगदितं द्रौपपाश्च चतुर्भुजम् आलोक्य वदनं समुख्य हृदमा हसन्निव। श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्हन्तव्ये आतता इव दार्हण मयवो मामृतं परिपायनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्सत्वत्या प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चल्या मह्यवे च। सूत उवाच अर्जुन सह सांज्ञाये हरे हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्ये द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापत वपन्नद्रविणादानां स्थानानि यार्पणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यो हितदेहिक पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चकुर्निहानिधिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणानिर्गृहो नाम सप्तमोऽध्यायः।